ऋषुरुवाच आज्ञापतस्तु ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता जजुरभ्युदुतायुधा ददृशुस्ते ततो देवी मिषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातु मुद्दमञ्चक्रुरुद्धता आकृष्टचापासिधरा तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चै रम्बिका तानुरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रीकुटीकुटिला तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपासिनी विचित्रखट्टाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिन्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा मवक्षयत तद्बलं पार्श्वनिग्रहाङ्कुशग्राही जोदघण्टासमन्वितान् समादावैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव जोधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनै चर्वयत्तुतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसन्यमपूथयत् त्वैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्नपि बलीनां तद्बलं सर्वमसुराणां महात्मनां ममार्धा भक्षयश्चन्या नन्यांश्चाताडयत् तथा असिना निहता केचित् खट्टाङ्गताडिता जग्मु विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा शनेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोभिद्राव तं कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमै भीमाक्षिं तं महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डसिप्तै सहस्रश तानि चक्रान्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्जठार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासतिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्त दुर्दशः दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत घृत्वा च केशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिनात् अथ मुण्डप्यधावत्यां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च घृत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्तचण्डिकां मया तवात्र वहितौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषुरुवाच तावानितौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः जस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महत्ते चण्डमुण्डवधः सप्तम अध्यायः समाप्तम्। ओं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओं श्री श्री चण्डिके देवी भक्तानां मङ्गलं कुरु।